SGKG Studies Guruji YouTube channel classes, and on this channel we are discussing now upon certain MCQs on Constitution. ऐसा जितने भी एग्जाम हमने देखा है, इन ऑल एग्जामिनेशंस ट्रेंड्स आर क्लियरली दैट एवरेजली 10% questions are being asked from the Constitution of India in MCQ form. So that is why it has been decided to take maximum classes in the form of MCQ on Constitution of India. So this is the third set of MCQs on Constitution of India. Question is, which of the following was the first Governor General of India? First Governor General of India, I think we have little bit given hint in the previous MCQ set. So anyhow, is it Warren Hastings? Is it William Bentinck? Is it Lord Canning or Lord Dalhousie? So you will, being a student of history also, you will realize that Warren Hastings was Governor General of Bengal in 1773 during the 1773 Regulating Act. Lord Canning was Governor General of India during 1857 first war of freedom for India. Lord Dalhousie was known for his lapse principle, and for that he was before 1857. लॉर्ड डलहौजी 1857 से पहले थे. लॉर्ड कैनिंग 1857 के प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन के समय में थे. विलियम बेंटिक ये बने हैं 1833 में, क्योंकि इनके बाद विलियम बेंटिक जो है यहाँ पर ये फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने हैं, क्योंकि इनसे पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का पोस्ट हुआ करता था. सो करेक्ट आंसर इज विलियम बेंटिक. विलियम बेंटिक वाज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल and he was the first governor general of India. Next question, which of the following was the last governor general of India? So we have discussed already, no need to discuss. So it was Lord Canning. Which of the following was the first viceroy of India? Yes. Now the post nomenclature is once again being changed. Earlier it was governor, then governor general of Bengal, then Governor General of India, and now that post is renamed as Viceroy of India. And Lord Canning has the opportunity to become last Governor General of India and first Viceroy of India. होता यह है कि 1857 का विद्रोह होता है, और 1857 के विद्रोह के बाद से जो ब्रिटिश इंडिया का कंट्रोल फुल हो जाता है और ईस्ट इंडिया कंपनी का जो प्रभाव होता है उसको न्यूट्रलाइज कर दिया जाता है. और उस समय में जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे उनका पोस्ट का नाम चेंज कर दिया जाता है, वायसराय ऑफ इंडिया कर दिया जाता है. सो उस समय में लॉर्ड कैनिंग जो थे, लॉर्ड कैनिंग उस समय गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे. सो ही वाज मेड वायसराय ऑफ इंडिया आफ्टर 1587. Which of the following activities for the first time the legislative and executive function of the Governor General Council was separated out? गवर्नर जनरल का जो पावर था उसको सेपरेट किया गया. लेजिस्लेटिव पावर सेपरेट, एग्जीक्यूटिव पावर सेपरेट. इज इट पिट्स इंडिया एक्ट? इज इट चार्टर्ड एक्ट ऑफ 1833? वाज इट चार्टर्ड एक्ट ऑफ 1583 और इट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1857? एंड द आंसर इज चार्टर्ड एक्ट ऑफ 1853. Under Chartered Act 1853, a separate government general India's Legislative Council, also known as
Indian Central Legislative Council was established. So for the first time the legislative and executive, इससे पहले legislative और executive function एक ही साथ थे. यहाँ पर क्या होते हैं, 1853 में legislative power और executive power को separate कर दिया जाता है. आज के डेट में वो separate है. Next question is, which of the following is not the feature of Chartered Act 1853? It introduced an open competition system of selection and recruitment of civil servants. Please omit this B. It extended the company rule but did not specify any particular time. It introduced first time local representation in Indian Legislative Council, or it abolished the commercial body, the court of directors of the company, and the answer is T. This is not the feature of 1853. In 1853 Chartered Act, the 1853 Chartered Act introduced an open competition system for selection and recruitment of civil servants. पहली बार 1853 में open competition शुरू हुआ. It extended the company rule but did not specify any particular time. It क्या होता था, हर 20-20 साल पर चार्टर्ड एक्ट आता था और एक्सटेंड करता था. सो 1833 के बाद से 1853 में ये चार्टर्ड एक्ट आ रहा है. इट एक्सटेंडेड, बट इस बार ये नहीं मेंशन था कि 20 साल के लिए एक्सटेंड हो रहा है. It introduced first time local representation in Indian Central Legislative Council. That is also correct. What is not correct? It abolished the commercial body, the court of directors of the company. That is not a part of 1853 Chartered Act. So before we move further, those who have not subscribed, please do subscribe, like, comment and share to your near and dear. It's your own YouTube channel. Please do subscribe. Next question. The Macaulay committee was appointed in 1854 and it is related to the education reform, social reform, Indian civil service or political reforms, and the answer is Indian civil service. Macaulay committee was appointed in 1854. Actually, Macaulay committee was head of so many committees. So the committee which was appointed in 1854, that was Indian Civil Service Committee, right? Next question. Which of the following is not a feature of the Government of India Act 1858? It changed the designation of Governor General of India to Viceroy of India. Correct. It abolished the Board of Control and Court of Directors and ended the double government. We'll see. It established the Secretary of State with 25 members council, or none. And the answer is C. C is not the correct feature of Government of India Act 1858. It established the Secretary of State with 25 members council. This is incorrect. Next question. Which of the following act made the first attempt to associate Indians with the law making process? Is it Chartered Act 1853, Government of India Act 1858, the Indian Council Act 1861, or Government of India Act 1909? And the correct answer is the Indian Council Act of 1861. In Indian Council Act 1861, first attempt was associated with Indians with the law making. कुछ इंडियन लोगों को लॉ मेकिंग के प्रोसेस में जोड़ा ब्रिटिश गवर्नमेंट ने. एंड इन 1861 में ये काउंसिल एक्ट बन के आ रहा है. और इन 1862 लॉर्ड कैनिंग नॉमिनेटेड 3 इंडियंस टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड दैट वाज सर दिनकर राव, राजा ऑफ बनारस एंड महाराजा ऑफ पाटियाला. सो ये 3 लोगों को नॉमिनेट किया गया लेजिस्लेटिव काउंसिल में ब्रिटिश के द्वारा. एक दिनकर राव जी हैं,
एक राजा बनारस के राजा और एक महाराजा ऑफ पाटियाला, इन 3 लोगों को, महाराजा ऑफ पाटियाला, किंग ऑफ बनारस एंड सर दिनकर राव, ये 3 लोगों को नॉमिनेट किया गया था लॉर्ड कैनिंग के द्वारा फॉर लेजिस्लेटिव काउंसिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following act initiated the process of decentralization by restoring the legislative powers to Bombay and Madras Presidency? Chartered Act 1853, Government of India Act 1858, the Indian Council Act 1861 or the Indian Council Act 1892? And the answer is the Indian Council Act of 1861. इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में it was initiated the process of decentralization by restoring the legislative power to Bombay and Madras Presidency. Next question, which of the following act empowered the Viceroy to issue ordinance? आज के डेट में क्या होता है, वायसराय के जगह पे हमारे यहाँ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को पावर है ऑर्डिनेंस इशू करने का। तो ये जो ऑर्डिनेंस इशू करने का जो पावर है वो सबसे पहले जो वायसराय के पास आया वो किस एक्ट के द्वारा आया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909। एंड द करेक्ट आंसर इज इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। सो इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में वायसराय को ऑर्डिनेंस इशू करने का पावर दिया गया, जो ऑर्डिनेंस हम प्रोबेबली आर्टिकल 143 में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में प्रेसिडेंट के पास है। आर्टिकल वी हैव टू चेक। सो इन दिस वे वी completed this set of MCQ. Those who have not subscribed, please do subscribe, like, share and comment on this channel. We will meet in the next class. Till then, namaskar.